as I was really looking to the Lord in prayer, और जब मैं प्रार्थना में परमेश्वर से the Lord led बातें me कर to रहा the book of Zechariah. था, और जकरिया की पुस्तक में परमेश्वर मुझे ले गया, This is a prophetic book for the end time church. और अंतिम समय की कलीसिया के लिए ये एक भविष्यवाणी परक It's a वचन है। prophetic book for the end time church in this present hour. ये वर्तमान घड़ियों के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए ये भविष्यवाणी परक वचन है। You know, when you read through the book of तो Zechariah, जब जकरिया की पुस्तक को आप पढ़ते हैं, the most outstanding words, ये अपने आप में एक उत्कृष्ट किताब है। can be found, or the key words for the book of Zechariah can be found in the book of, in chapter 1, verse 14. और पहले अध्याय की 4वीं आयत जो है वो इसका कुंजी So the वचन है। angel that communed with me said unto me, Cry thou, saying, Thus saith the Lord of hosts, I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy. तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। Yes, the word jealous and jealousy. और जलन जो शब्द है, Yes. And this is one word that is so much mentioned in the book. और इस किताब में जलन शब्द परमेश्वर का जो हम इस पूरी पुस्तक में And देखते हैं। again in chapter 8 और 8वें अध्याय में and verse 2, और उसकी आयत 2 में, Thus saith the Lord of hosts, I was jealous for Zion with great jealousy, और and सेनाओं- I was jealous for her with great fury. और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, Yes. वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई। So we see this is a very important word for God's people in this hour, that God is jealous and He has a great jealousy for Zion. परमेश्वर के जनों के लिए इन घड़ियों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है कि परमेश्वर यहोवा को परमेश्वर के लोगों के प्रति जलन So हुई। as we are moving into this year, और जैसे अब हम इस नए साल में our प्रवेश कर रहे हैं, salvation is nearer than we first believed. और हमारा उद्धार और करीब आ रहा है, तो उस The- तुलना में जो कि हमने पहले The पाया goal था, that God has set before us is nearer. और जो लक्ष्य हमारे सामने रखा था बहुत ही करीब आ If गया है। we are ever progressing in Christ, और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, if we are ever progressing in और Christ, मसीह में हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, then our salvation is closer. तो हमारा उद्धार बहुत Our करीब है। destiny is nearer than we began. और जहां से हमने आरंभ किया था उससे और करीब जो हमारी मंजिल आ गई है। So we need to realize this, और ये बात को हमें समझना होगा that God is jealous. कि परमेश्वर जलनशील है, He has a great jealousy over Zion, His people, His house, His ultimate purpose. और सिय्योन और उसके लोगों के प्रति और वो अंतिम लक्ष्य के प्रति परमेश्वर की जलन और जलजलाहट को हम यहाँ देखते हैं। The name Zechariah means Jehovah remembers. और जकरिया का मतलब है कि यहोवा परमेश्वर याद करता है। And Zechariah was the prophet of God's power. और जकरिया जो है नबी, वो परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। When we read through the book of Zechariah, जकरिया की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, Zechariah is known as, the book of Zechariah is known as one of the minor prophets. और जकरिया जो है एक छोटे भविष्यवक्ता के रूप में गिना जाता I'm है। just giving you some background of this book. मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको दे रहा हूँ। And yet, this is the longest among the minor prophets. और ये सबसे छोटे भविष्यवक्ताओं में से छोटा बड़ा भविष्यवक्ता है। No. Yeah. लंबा इनके इसमें अध्याय है। Yes. This is the longest book among the minor prophets. और जो छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में इसकी Yes. पुस्तक के अध्याय अधिक हैं। And we see that many things are covered in this book. और इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी बातें समाविष्ट की गई हैं। We can see that the things written in Zechariah is linked with Haggai.
और जो जकरिया के पुस्तक में लिखा है उसका संबंध जो है वो हैगे की पुस्तक से है। They too prophesied together. और ये दोनों मिलके जो है भविष्यवाणी करते हैं They shared the burden of God together और ये परमेश्वर के बोझ को एक साथ बांटते हैं and took the task of encouraging the people who are involved in returning to the Jerusalem to build the temple of God. वे लोग जो परमेश्वर के जन जो लौट के आए थे परमेश्वर के भवन की बहाली के लिए उनको दोनों ही भविष्यवक्ता उत्साहित करते हैं And we see that this book is also covered in the books of, Ezra and also Nehemiah. और ये पुस्तक जो है नेहमिया की पुस्तक और एजरा की पुस्तक में भी इनका संबंध देखने मिलता है We see, so this book is so important. इसीलिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है There are so many things written in this book which is so prophetic about God's people in these end times. और जो बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं वे अंत के दिनों की भविष्यवाणियां हैं Haggai seems to be an elderly person, और जबकि हेगे एक वृद्ध व्यक्ति है while Zechariah seemed to be a younger person. और जकरिया एक जवान व्यक्ति है And he was the grandson of a man called Iddo. और इदो का जो है ये पोता है And we read about this man, Iddo, who came in the time of Nehemiah. और ये नेहमिया के समय का इस चित्रण हम देखते हैं He came to Jerusalem. और वो यरूशलेम आए His name is written in the book of Nehemiah 12 verse 4 and 16. और 12:4 में भी हम इसका चित्रण देखते हैं नेहमिया की पुस्तक में Yes. I'm just giving you this background to say that Zechariah had something to really speak to the people of God spread over those period of time. और उस समय के दौरान जकरिया जो है परमेश्वर के बोझ को लोगों के बीच में बांट रहा था मैं उन पृष्ठभूमि को आपके सामने रख रहा हूं And also he has got so much to speak to us in this end time. और इन अंत के दिनों के विषय में ये बहुत सारी बातें कहता है And the other thing about Zechariah और is दूसरी और चीज जकरिया के विषय में his prophecies contain a large visionary element. और इसकी भविष्यवाणियों के अंदर एक दर्शन का तत्व देखने मिलता है There is so much that he saw, rather the Lord shown him. और बल्कि बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने से दिखाया जो कि दर्शन के रूप में से देखा Yes, we know that when we look at the book of Daniel, God shown him many things. और हम दानियल की पुस्तक में दानियल के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारी बातें उससे दिखाई Even so, we see in the book of Zechariah, God had revealed to him many things through visions. और दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारी बातें जकरिया को दिखाई Yes. So this is a very important book for God's people even in these end times. इन अंत के दिनों के लिए परमेश्वर की ये जकरिया की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण उसके लोगों के लिए Yes. When you read through the visions of even written in the book of Zechariah, जो दर्शन की बातें परमेश्वर जकरिया की पुस्तक में हम देखते हैं we see that God revealed to him many things और बहुत सारी बातें परमेश्वर ने उसे प्रकट की गई हैं which would really help God's people in their life. उनकी परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में बहुत ही उपयोगी रही वो सारी बातें जो भविष्यवाणी के रूप में Now we जकरिया know के द्वारा that, की we गई। will see that a little more clearly. और स्पष्ट रूप से हम आगे देखेंगे But these people were living in frustration. और ये लोग एक कुंठा में जी रहे थे They were living in times of contradictions. और वे एक विरोधाभास की अवस्था में जी रहे थे Yes. And they were living under a lot of pressure. और एक बड़े दबाव के तहत वो जी रहे थे Yes. And in the midst of that, इन सारी चीजों के मध्य में Zechariah could see glimpses of what God has for them. और परमेश्वर के पास उसके लोगों के लिए क्या है उसकी एक झलक जकरिया देख सकता है Yes. In the discouraging times, God has shown Zechariah to speak to God's people as to what God is thinking about them. उन निरुत्साहित समयों के
अंदर जकरिया को परमेश्वर ने वो बताया जो कि परमेश्वर के लोगों के लिए उसके हृदय पे था। Yes. The enemies had taken victories over them. और शत्रुओं ने उन पे जय पाली थी। The enemies were triumphant over God's people. परमेश्वर के लोगों के ऊपर शत्रु ने जय पाली थी। And a handful of, people or refugees have come back to Jerusalem. और वे मुट्ठी भर लोग एक रिफ्यूजी होके वहां पे आए हुए थे यरूशलेम में, Trying to build with their pathetically inadequate resources a temple for God. और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन की बहाली के लिए अपर्याप्त साधनों के साथ वे आए थे। Yes. A house that has been built with the wealth and the influence of Solomon, the great king. और सोलोमन जो कि महान राजा था, उसने बड़ी धन और संपदा से उस भवन का निर्माण किया था। But here we find a few people, पर यहाँ पे हम थोड़े से लोगों को a देखते हैं remnant of people, और वो शेष लोग हैं refugees, और वे रिफ्यूजी हैं slaves. और वे बंधुए They थे। have come to build the house of God with inadequate resources in their hands. और अपर्याप्त संसाधनों के द्वारा परमेश्वर के भवन की बहाली के लिए आए थे। No wonder they felt depressed. और इसमें कोई आश्चर्य वाली So बात नहीं this है is कि the वो बहुत ही background of the निरुत्साहित थे। letter of Zechariah. और यही जो है जकरिया की पुस्तक में हम देखते And how true it is for us even today. हैं और कितना सत्य है आज के समय में भी। Yes. So we see here the book of Zechariah, यहाँ हम जकरिया की पुस्तक and it begins like this. और इस तरह से वो आरंभ होती है। In the 8th month, in the 2nd year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying. और दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास जो बरकिया का पुत्र और ईदो का पोता था, यहोवा का वचन पहुंचा। Yes. Now, some of the scholars say this, और कुछ विद्वान कहते हैं that Zechariah's these words came, और जकरिया के पास ये वचन or he पहुंचे, began to speak this और message ये संदेश उसने बोलना आरंभ किया at a time when Haggai was already prophesying. और उस समय हगई भविष्यवक्ता भी भविष्यवाणी कर रहा था। It says that, और कहता है, let's turn to chapter 2 of Haggai, और हगई की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय just the पढ़िए। other page. Haggai chapter 2 दूसरा अध्याय हगई की पुस्तक and verses 9 and 10. 9 और 10 आए। Yes. The glory of this latter house shall be greater than of the former, said the Lord of hosts. In this place will I give peace, said the Lord of hosts. In the 24th day of the 9th month, in the 2nd year of Darius, came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Thus said the Lord of hosts, ask now the priest concerning the law, saying, and it goes on. So the scholars say that विद्वान कहते हैं that when Haggai prophesied these two messages, और ये verses दो written in संदेश- verse 10 and 9 and 10, और 9 और 10 आयत में जो बातें जो परमेश्वर ने की थी, भविष्यवक्ता हगई ने कही, it was during this time और ये वो समय था that Zechariah began his prophecy. जब जकरिया ने भी भविष्यवाणी की। Yes. So we see that they had begun to build the temple. और हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के जनों ने वहां पे मंदिर बनाना आरंभ किया। And we know how they faced a lot of opposition. और हम ये भी देखते हैं कि वहां पे किस तरह से उन्होंने शत्रुओं का जो विरोध है उसको देखा। So they saw in their own eyes उन्होंने अपनी आंखों से देखा the insignificance of what they are building. और जो वो बना रहे थे वो कितना अल्प था। They could see the smallness of what they were building. और जो वो बना रहे थे वो कितना छोटा था। Yes. So they were going through real discouraging times. और वो एक ऐसे समय से गुजर रहे थे जो कि निरुत्साहित करने वाला था। They were disheartened by
what they saw before themselves. और जो कुछ उनके सामने घट रहा था उसको देख के वो निरुत्साहित हो गए, तो उनके हृदय टूट गए And थे। the word of the Lord came through Zechariah. जकरिया के द्वारा परमेश्वर का वचन आया उनके And पास, the beginning words were words of warning to God's और people. परमेश्वर के लोगों के लिए एक चेतावनी भरा वचन Yes, आया। Zechariah warns them against their evident rising tendency to return to their ways of disobedience of their fathers. और परमेश्वर के जनों को जकरिया ने चेतावनी दी Yes. उनकी प्रवृत्तियों को लेके कि उनके हृदय जो है निरुत्साहित हो गए थे। Yes, and were returning like I believe, Lord.
God is giving her life. Hallelujah. Shall we all pray? Just give ourselves a more